Okay. So, okay, let's start it recording. So, hello everyone. So, we'll start the problem solving session 5 for this course. I'll quickly go over the this week's assignment. So, first question was on passivation. So, I think even the professor mentioned this in the class that the passivation condition is not thermodynamically driven condition, like it's more a kinetically driven. That's why it's false. सर अगर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो मतलब लेयर सस्टेन कैसे करती है? फिर तो उसको तुरंत करोट करना चालू कर देना चाहिए। Hmm. I guess you have a thermal formation of the layer is thermodynamically stable. That I agree. But thermodynamically, that corrosion and potential. इसमें सर जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैसिव कंडीशन ऑफ द मेटल इज थर्मोडायनेमिकली स्टेब इज इट थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अगेंस्ट करोजन। स्टेट की बात कर रहा है सर। स्टेट में अगर जाएंगे तो स्टेट इज समथिंग कि जब ऑक्साइड फॉर्म हो गया तब वो स्टेट मानी जाएगी। तो उसके बाद तो सर वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। अनस्टेबल होगा तब तो करोट करना चालू कर जाएगा सर। उस इसमें तो मे बी आई गेस शायद वर्डिंग डिफरेंट। प्रोफेसर ने एग्जैक्टली क्लास में क्या बोला था? मैंने अभी आज के लेक्चर इस वीक वाले लेक्चर देख रहा था तो सब कुछ मेंशन किया था। राइट। मतलब इसमें सर मेरा एक सबमिशन और है, जैसे हम इम्यून स्टेट में भी जाते हैं, जैसे जो इम्यून हम्म जोन होता है वहां पर भी हम्म अगर देखा जाए तो हम एक एक पहले एजम्पशन ले रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा कंसंट्रेशन है मेटल आयन का वो 10 टू द पावर -6 मोल्स पर लीटर से कम मान के चल रहे हैं। ये एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि उसके उसके अकॉर्डिंग हम इम्यून वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं कि इसके नीचे इम्यून हो जाएगा। मतलब इसके नीचे हम मान के चलते हैं 10 टू -6 के नीचे कि इसके अगर इससे कम डिसोसिएशन हो रहा है और मेटल आयन इससे कंसंट्रेशन कम है तो हम्म कोरोजन नहीं है। लेकिन हम्म सर अगर देखा जाए तो मतलब ये एक एजम्पशन हो गया ना, 10 टू द पावर -6 के नीचे भी अगर देखा जाए तो डिसोसिएशन तो हो रहा है। अगर इसको हम इनस्टेबिलिटी कह दें तो फिर डिसोसिएशन तो हो ही रहा है। अगर देखा जाए तो स्टेबल तो ये भी नहीं है, बट एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि -6 के नीचे अगर है तो हम मान के हम्म। चलते हैं कि स्टेबल है। वैसे ही ये पैसिव लेयर में इनिशियली तो पैसिव लेयर बन रही है। हाँ मेटल हाँ। अनस्टेबल था, उसने पैसिव लेयर बनाई, बट वो प्रोसेस और वो जो फिनोमिना है वो इतना छोटे टाइम का है और इतनी इतनी थिन लेयर है कि उसको भी हम ऐसे ही एज्यूम कर सकते हैं जैसे हम ये मान के चलते हैं कि इम्यून जोन में 10 टू द पावर -6 से कम कंसेंट्रेशन होता है, तो हम मान के चलते हैं कि स्टेबल जोन है। हम्म क्योंकि अगर इस लॉजिक हम्म से जाएंगे तो जो इम्यून जोन है वो भी अगर देखा जाए तो अगर 10 टू द पावर -8 अगर पकड़ लेंगे तो करोट कर रहा है। -6 हम अज्यूम करके चल रहे हैं तो मानते हैं कि -6 के नीचे नहीं कर रहा है। बट डिसोसिएशन तो हो रहा है सर, वहां पे भी -6 से कम हो रहा है बट हो रहा है। हाँ हाँ। आई गेस मेनली वही काइंड ऑफ मैकेनिज्म की बात करने उस सेंस में इसका क्वेश्चन का मतलब उस सेंस में होगा कि पैसिव कंडीशन होती है तो उसमें मेनली किस मैकेनिज्म से
आप करोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहे हो। मेनली तो आप काइनेटिक स्लो कर रहे हो, बिकॉज वही डिफ्यूजन एक लेयर ऑफ सरफेस पे एक थिन लेयर आ गई जो डिफ्यूजन को प्रिवेंट कर रही है। हाँ। हाँ एग्जैक्टली, थर्मोडाइनमिक वर्डिंग में भी थोड़ा बेटर कर सकते थे। मतलब इसका इंटरप्रिटेशन सर थोड़ा सा वेग फर्म सा है, हो गया। फॉल्स फॉल्स नहीं समझ में आ रहा है मेरे को कि ये कैसे। सिंपल सा है सर, अगर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तब तो कोरोजन चालू हो जाना चाहिए। हाँ हाँ मतलब हाँ, अगर वो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी आई गेस यार उस सेंस में। हाँ मतलब थर्मोडायनेमिकली अगर पैसिव लेयर ही स्टेबल नहीं होगा तो फिर करोजन होगा। तो उस लेयर की बात कर रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा जो वेग है। कोरबर्ग्स डायग्राम में, कोरबे डायग्राम में स्टेबिलिटी या मतलब कोरोजन होगा नहीं होगा, वो दो हम्म। दो जोन है सर, एक पैसिव जोन है और एक आपका इम्यून जोन है। दोनों केस में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ फिनोमिनाज हो रहे हैं, बट वो फिनोमिनाज इस तरह के हैं जिसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कोरोजन नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम इस पे भी जाएंगे हम इम्यून, बहुत। -6 से कम के रेट पे डिसोसिएशन हो रहा है, 10 टू द पावर -6 हम्म। से कम का हो रहा है, बट हो रहा है। तो अगर हम हाँ। ये मान के चलें कि स्टेबल मतलब ये है कि डिसोसिएट करेगा ही नहीं, तो इम्यून जोन में भी डिसोसिएट कर रहा है, अगर ऐसे देखा जाए तो वो भी थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गया है सर, अगर देखा जाए तो। हम्म। तुमने क्या मार्क किया था? ट्रू। मैंने ट्रू मार्क किया था, मेरे को ट्रू अच्छा। ट्रू ही लगा सही। हाँ क्योंकि मेरा लॉजिक सर यही था कि अगर अनस्टेबल है तो कोरोट हाँ हाँ, है तो नेगेटिव कोरोट नहीं पॉइंट था। करेगा। हम्म। मतलब थोड़ा सा भी अगर करोजन हो रहा है तो मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबल है। हाँ। अब। इवन सर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना सर, जो ई ई ई नॉट होता है, जो उसमें भी सर हम्म। बेसिकली देखा जाए तो अगर उसको भी स्टेबल मान सकते हैं, बट वहां पे भी दो रिएक्शन सर पैरेलल चल रही होती हैं सर। एक मतलब मेटल डिसॉल्व हो रहा होता है, एक डिपॉजिट हो रहा होता है, मतलब दोनों साइड रिएक्शन चल रही होती है। तो तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो फिनोमिना हो रहा है, बट वो फिनोमिना इस तरह का नहीं है कि जो कोरोजन को या कोरोजन होने दे। तो अगर देखा जाए तो फिर वो पैसिव में भी वैलिड होगा फिर तो। उस केस में तो बट रिएक्शन की एनर्जी टोटल अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ई जीरो हो गया बेसिकली। ई जीरो है तो डेल्टा जी इजिकल्स टू माइनस एन एफ, और डेल्टा जी और डेल्टा ई में जो रिलेशन है तो उसके हिसाब से फिर डेल्टा जी रिएक्शन की जीरो है तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने मतलब रिएक्शन तो इन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल से हम क्या इंटरप्रेट क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का डेफिनेशन क्या इंटरप्रेट करेंगे यहाँ पे? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आई गेस रिएक्शन की डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस नहीं होनी चाहिए, तो पॉजिटिव होनी चाहिए। आई वुड गेस ये होना चाहिए थर्मोडायनेमिकली स्टेबल तो कोई चीज हो बात कर रहे हैं तो। अगर उस फॉरवर्ड रिएक्शन की डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रही है तो मतलब रिएक्शन फिजिबल है ना, अपने आप होगी वो। तो सर अगर आयरन का पोरबैक, आयरन का अगर पोरबैक डायग्राम देखें तो अगर ऐसे देखा जाए तो आयरन बाय डिफॉल्ट जो है सर वो तो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। एक केस में हम जब इम्यून जोन में ले जा रहे हैं तो हम नेगेटिव वोल्टेज, उसको नेगेटिव वोल्टेज दे करके हम उसको इम्यून जोन में ले जा रहे हैं। और हम्म। दूसरे में पैसिव स्टेट के केस में हम उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ रही है, जिस कारण से उसका कोरोजन कम हो रहा है। तो दोनों हाँ। केसेस में सर एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसकी बाई वर्च्यू जो उसकी अनस्टेबिलिटी थी उसको स्टेबिलिटी में कन्वर्ट कर रहा है। हम्म। बट उसमें फिर हमने इतनी पोटेंशियल दी कि डेल्टा जी रिएक्शन की जीरो हो जाए, मतलब ई अगर हम्म, चलो मैं सोच के मे बी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में वी कैन डिस्कस।
तो एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, मतलब ऐसे में ना क्लैरिटी आती नहीं तो कुछ। हाँ एक्चुअली हम नहीं बना रहे ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी सेम, सो आई डोंट नो हु मेड इनिशियली ये क्वेश्चंस बनाए किसने। तो इवन लास्ट हमें प्रीवियस ईयर के उसकी एक्सेस है, तो उसमें भी एग्जैक्टली सेम असाइनमेंट है। यूजुअली ऐसा करते हैं कि ईयर टू ईयर असाइनमेंट चेंज करते हैं। जैसे आई वाज एट इन अदर टेक, तो उसमें ऐसा था कि हर साल नया असाइनमेंट थे, अलग असाइनमेंट थे। But, हाँ। ओके, Purber diagram. So, which of the following statement are true with respect to a Purber diagram? So, it doesn't tell us anything about the kinetics, so that's why first is incorrect. Okay. Uh, it's easily available for alloys. That's incorrect. It's mostly available for pure metals and is mostly confined to pure water aqueous solutions. Again, pure aqueous solutions, so initial solutions are very. It helps us identify the passivity, stability, and active resolution region of the metal. Yeah, that's what it does. So, electronics is a simple enough machine. Confusion in the metals. Third question: relation between corrosion rate and the atmospheric temperature is as follows. This I think this was discussed in the course. हाँ सर, ये डायरेक्ट लेक्चर से ही है सर क्वेश्चन। हाँ ये तो डायरेक्टली, बट अगेन पीपल चेक इट ऑन यूट्यूब, so उनके लिए। So this is related to the oxygen dissolution. So initially up till 100 degrees Celsius, the corrosion is increasing, right? And so if it's a open system, after 100 degrees Celsius, after 80, the amount of oxygen left in the water decreases. So oxygen solubility decreases. So that's why the corrosion rate decreases. And if you make it a closed system, like on the right, so now you're trapping all the oxygen inside your system. So the corrosion rate continuously increases. So that's why only corrosion rate initially increases and then decreases with temperature for open air systems. So this is an open air system. And in the case of a closed air system, the corrosion rate increases continuously. Yeah, so the reverse of it is stated, yeah, corrosion rate decreases as we decrease the temperature. So as we increase the temperature, the corrosion rate increases. This question. When I was trying to solve it before the class, I was getting different answer. So
And this formula, I think they just picked it from the internet. I don't know. They covered in the class or not. Yeah. So 1 MPY is equals to 0.0694 into rho. This is in terms of GMD. This is the conversion. So we want to do the other way. So 1 GMD is let's say 1 over 0.0694 into rho MPY. So if you multiply both sides by 1.45, so 1.45 divided by 0.0694 into 7.8. So the answer I got was 2.67 MPY. So the correct answer is they have given B. I mean, it's close, नहीं not सर, इसमें exactly अगर the आप same. अगर अगर इसमें देखेंगे ना सर, जो एक तो जो सॉल्यूशन अपलोड करा है ना सर, उसमें जैसे आपने हाँ 1.45 से उसमें तो मल्टीप्लाई किया है। अलग, हाँ वो और आप अगर सर लेने से, 2.35 को 2.67 पे भी ले जाएंगे ना, तो आपको 3.93 नहीं मिलेगा सर, वहाँ 5 पॉइंट समथिंग आएगा सर। हाँ ये वैल्यू तो और भी अलग आ रही है, यस। तो सर तो इसमें तो फिर चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। हाँ तो मैंने एक्चुअल में सर सेकंड गेस, जो मेरे को जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरे को आंसर नहीं मिला था, तो मैंने देखा कि चारों ऑप्शन में से कहाँ एमपीवाई से क्लोजेस्ट है। यूए पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन कहाँ सही बैठ रहा है, तो केवल ए अच्छा। वाला जो ऑप्शन था उसमें वो कन्वर्जन सही बैठ रहा था, तो मैंने ये लगा दिया था। अच्छा। अदरवाइज मेरे को आंसर नहीं मिला था इसका। हाँ माइक्रो एम्पियर से मिली इंच पर ईयर का जो कन्वर्जन है, वो केवल फर्स्ट वाले में मिल रहा है सर, बाकी में कोई कन्वर्जन मैच नहीं होगा सर ओके, बाकी तीनों। इससे इसमें कन्वर्जन करो तो भी। ओके ओके। तो मैंने सर कन्वर्जन से ही इंटरप्रेट करके आंसर लगाया था, अदरवाइज मेरे को आंसर कोई सही नहीं मिला था इसमें। हाँ आई कैन, ठीक है मैं बात करता हूँ अभी। अब इस डिड यू पोस्ट इट ऑन द फॉर्म कि आंसर इज इनकरेक्ट क्या करें? सर पोस्ट तो किया है, बट उस पर कुछ रिप्लाई मिला नहीं सर। मैं एक बार अच्छा सर आप ठीक थोड़ा है, देखा तो तो। आई विल आस्क कि चेंज कर दे आंसर को। एंड द सेकंड पार्ट, second part we are asked 12 के दाई को, और it was, you are given GMD, so grams per meter square per year, per day. So if I convert it into, so we are given this is 1.45 grams per meter square per day. Meter per day. So if I convert it into second, so 1.45 grams per meter square into 24 into 600. I'll write the units separately. 1.45, that's right, 24 into 3600. This is the weight loss in grams per meter surface area in a second. Okay. Again, to convert it into uh, weight loss per centimeter square, so 1.45 24 3600 into 10 to the power square grams per centimeter square per second. So this is the amount of weight loss per centimeter square per second. Okay, so 1.45
4, 6 into 10 to the power 6, 6. Okay, so now we know I is equals to NF into number of moles. The number of moles should be just gram per density. Oh, molecular mass, sorry. So NF into the weight loss in grams per centimeter square per second. This is the number of moles lost per centimeter square per second, and divided by molecular mass. So this is 2. This is 1.45 into N. F is 96500 divided by 5 by 55.85 into 3600 26 into 24 into 10 to the power 6. If you do this, you get 5.79 microamps into 10 to the power minus 6 amps per centimeter square. Charge per second is ampere, so ampere per centimeter square. So again, there's no option matching. So I'll talk to them like what can be done. Another way is a simple formula. I think, yeah, it's the one they use. And if you're given the corrosion in NPTEL, अच्छा, मैंने जो सॉल्यूशन अपलोड किया सर उसमें 1.45 का फैक्टर छूट गया है, जिस कारण से वो फिर आगे हाँ भी क्रेप्ट कर गया है पूरा। हम्म so is I core into your molecular mass divided by temperature intensity into 2. And this is the gram equivalent weight. This is the density. This is the conversion factor. So if you do this, getting the I core इससे आ रहा है 2.67 into 7.8 into 2 divided by 55.86 85 into 0.13. Again, it's very 5.7 microamps per centimeter square. So simple, like this is easier to remember formula. Manually you derive the whole thing from one step to the other. But yeah, at the same time you can remember the formula. इस पे तो सर नंबर मिलना चाहिए सबको। हाँ agreed. कोई ऑप्शन ही नहीं है तो सबको मिलना चाहिए. कॉम्पिटेटिव एग्जाम से तो यही होता है, या फिर नंबर हटा ही देते हैं उसका. बढ़िया. ये तो सर करेक्शन हो गया है इसका, इसका तो सही ऑप्शन आ गया है सर अभी। हाँ तो pH independent reaction में it will be horizontal x-axis scale on. So this is your E, this is your pH. So if it's pH independent, so irrespective of whatever pH value you have, the E
remain same. So straight line parallel to x-axis. पहले इसका गलत था क्या आंसर? मतलब मैंने आज ही चेक किया है। ये सर मैंने पोस्ट किया था डिस्कशन फोरम पे, तो मैम ने एक्नॉलेज किया था इसको, और फिर ये करेक्ट सॉल्यूशन रिलीज भी हो गया इसका, और अभी इसकी मार्किंग ठीक भी हो गई है सर। ओके ओके, पहले इसका कुछ और था, वही था। पहले सर वाई एक्सिस था, फिर उसके बाद अच्छा फिर अच्छा, एक्स हो गया। ओके ओके। देखिए इसमें तो सोल्यूशन सही है। The equal value for zinc in 0.5 normal HCl with 0.25 atmosphere hydrogen over it is minus 0.82 versus SCD. To what extent the catalytic reaction is polarized? If the zinc ion concentration is taken as 10 to the power minus 2 moles per liter, what extent is zinc polarized? So, they're given at 0.5, 0.5 normal HCl, so HN concentration is equals to 0.5 and pressure of H2 is given as 0.25. Metals given E core just minus 0.821 or 820. To convert it to, this is versus S standard caloric electrode. To convert it to S standard hydrogen electrode, you add 0.241. So this is equals to minus 0.8 plus 0.041, 0.41. So this is SHE. So this value you get is minus 0.579. I think that's all the things that can go on. So now we can find the standard reduction potential for these conditions. So yeah, zinc ion concentration is also given. Zinc plus 2 to 10 to the power minus 2. So for hydrogen, uh, the standard reduction potential would be this plus electron plus equals to 0 plus 0.0559 equal to log of H plus N concentration square MPH pressure of partial pressure of H2. 0.059 to log of HN concentration is 0.5. This is 0.25, so this is 1. So the whole thing becomes 0. Log of 0. Log of 1 is 0. Okay. Next for the zinc. Zinc reduction potential is zinc plus 2 plus 2. Reduction plus 2 electron. Get zinc. So E Zn is equals to
Narrow standard reduction potential of zinc was given 0.76 plus 0.059 divided by 2 log of Z concentration minus 76 0.059 divided by 2. So this is 10 to the power minus 2, the log of 10 to the power minus 2. This becomes minus 0.6 minus 0.059 divided by 2 into minus 2. Oh, so cancel it, put minus over here. If you subtract these two, you get minus 0.819 volt. E core was given minus 0.579 volts. To the extent of polarization, theta anodic is E core minus then so this is minus 0.579 minus 0.819, so 0.24 volts for zinc. Yeah, so that's first A or D option. Next, second part, cathodic overpotential for minus 2 0.579 minus 0 plus minus 579. So, yeah, D option is both these are answers. Yeah, D option was both. Seventh question. These are following corrosion is predominantly because of flow condition of environment. So cavitation happens whenever you have very fast turbulent uh, flows. So for small second you get like a vacuum forms inside the liquid, and when that bubble suddenly collapses on itself, that will like increase the temperature to very high, locally to a very high value, and that leads to corrosion. So that's the cavitation damage. It's not mentioned as corrosion specifically, but yeah, so it's not a corrosion. It's happening due to the damage of that collapsing bubble. And erosion corrosion is just yeah, erosion. It's इसमें सर मेरा एक 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 डाउट था। मैंने आंसर तो थर्ड और फोर्थ ही लगाया, बट मेरा एक डाउट है। जैसे एक पाइप में फ्लो हो रहा है और पाइप जो है वो 90 डिग्री बेंड है, तो जो बेंड वाला पार्ट है वहां पे फ्लो के कारण से एक फोर्स जनरेट होगा, और जो बेंड वाला पार्ट है वहां पे आपका कैविटेशन भी होगा, इरोजन भी होगा, सारी चीजें होंगी। तो जो फोर्स है
पानी का बेंड होने का, उसके कारण से स्ट्रेस भी जनरेट होगा। तो स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग इस केस में क्यों ऑप्शन नहीं है? अब एक तो बहुत स्पेसिफिक वो हो गया बैंड है, एंड इन जनरल जनरल जैसे हर फ्लो की कंडीशन से आगे जैसे बोट पे बात कर रहे हैं, हर केस में आई गेस नहीं वैलिड है, इसलिए एक तो ये रीजन कह सकते हैं। बाकी हाँ, अगर असल में सर, ये तीनों जो ऑप्शन है ना, जो फर्स्ट ऑप्शन से थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ये बेसिकली मैकेनिकल असिस्टेंस है। ये खुद में कोरोजन का फॉर्म नहीं है, ये कोरोजन के साथ मिलकर के कोरोजन को एक्सेलरेट कर देते हैं। हाँ, इवन इरोजन भी जैसे इट्स रिमूविंग द ऑक्साइड लेयर है कुछ भी ऊपर से, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है डिटेरिएशन। कोरोजन देखा जाए तो केवल बी ऑप्शन है, सेलेक्टिव लीचिंग, अगर देखा जाए कोरोजन वहीं पे हो रहा है। बाकी तीनों तो मैकेनिकल फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को असिस्ट करते हैं। हम्म। हाँ वही, अगेन फॉर्म्स ऑफ करोजन लिख दिया तो या कंफ्यूजिंग वर्डिंग अगेन, कैविटेशन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ करोजन। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को लेकर के ना सर, और साथ में जब मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस होते हैं तो हाँ हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है उसमें। अगर सिंगल ऑप्शन हो तो मे बी हम फिर भी सर्टेन हो सकते हैं। अदरवाइज ना हम्म। थोड़ा सा इस तरह की क्वेश्चंस में ना कंफ्यूजन आ जाता है, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसको हम्म। इंटरप्रेट करना मुश्किल पड़ता है। हाँ, इसे सब्जेक्टिव, अच्छा सब्जेक्टिव मार्किंग करना उसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एनपीटीईएल पे नहीं कहते शायद। Yeah. So next question. A linear polarization slope delta E by delta I at low current density for iron is corrosive in a corrosive solution for equals this value 2 millivolt per microamp per centimeter square. Calculate the corrosion rate in grams per meter square per day. Assume beta anodic Tuffle slope is given as 100 millivolt per decade. The density of iron is 7.8 and the atomic mass is given. So first, since it's low current density, we can apply the polarization equations of uh, and the polarization condition, the polarization resistance. Which is also equal to this value del E by delta E by delta I given as 2 millivolt per microamp centimeter square. So keep the centimeter square same and convert it to volts per amp. 2 into 10 to the power minus 3 divided by 10 to the power minus 6 amps per centimeter square, or volt amp per centimeter square. 2 into 10 to the power 3 volt amp is volts per amp centimeter square. So if in the lecture notes they have given a slightly different formula there from the solution. I don't know I if the think professor. 2.303 was missed in the lecture slide. That हाँ, 2.303 will I also think come. वो approximation में they missed the value I think.
So there should be a factor of 2.303. With 2.303, the answer will the C will be the answer in that case. Uh, 2.303 was mixed. I referred one book. There it was given 2.303. okay. So I should use that, and yeah, I for because beta A beta C divided by 2.303. Or take RP. So just put the value and fill it done. 0.1 into 0.1 divided by 2.303 to 2000. So 10.85 into 10 to the power minus 6 and percentage square 10.85 micro and percentage square. So they first converted it to MPY and then to GMD. So we had that formula I for Livingston 0.13. Corrosion rate was in mils in MPY does 0.13 into I core into atomic weight. So for this is 55.85 divided by valency. 7.8 grams. I get 5.049 and from MPY to GMD conversion 0.06 and 4 into 7.8 GMD multiply both sides by 5.049 that's 2.73 grams per meter square per day. 2.7. So passivating metals, which of the following forms of corrosion are predominantly seen in passivating metals and alloys? So galvanic corrosion, you need two metals in contact with each other. So this is obviously not correct. Intergranular corrosion. So
अह, सर इंटर ग्रेनुलर फ्रोजन इसमें क्यों नहीं होगा सर, ये भी मैं समझ नहीं पाया हूँ एक्चुअल में, क्योंकि अगर आप स्टेनलेस स्टील को देखें तो उसमें बहुत प्रोमिनेंट फॉर्म वो सेंसिटाइजेशन वाला होता है, वो आईजीसी होता है। इनफैक्ट स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग का भी एक मोड आईजीसी होता है। तो आईजीसी क्यों नहीं लिया है सर, मैं ये इसमें नहीं समझ पा रहा हूँ। वही, हाँ, ऐसा यार, डिस्कशन अंदर। और पिटिंग करोजन तो ऑब्वियस है, सो पिटिंग करोजन, सो व्हेन यू सर हैव अ गैल्वेनिक गैल्वेनिक हटा करके बाकी सारे ऑप्शन फिट बैठ रहे हैं सर। हम्म तो पिटिंग तो ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव अ पैसिवेटेड सरफेस, एंड वहाँ पे जहाँ भी फिल्म डैमेज होगी, वहाँ पे वेयर यू विल गेट करोशन, सो इट फॉर्म अ पिट, सो पिटिंग करोजन। Fresh corrosion cracking, so whenever you have passivating layer and due to stresses, like expanding expansion or contraction, so that film may get damages or get micro fissures, so that fissure will act as a start corroding. So fresh corrosion cracking is fine. Reverse corrosion, so oxygen is limited, so that's preventing passivation for layer formation, I guess. Yeah, पैसिवेटिंग लेयर ही फॉर्म नहीं होगी, आई गेस, रेस्पिरेशन में तो। इंटरग्रेजुअल में कुछ स्टील्स में आई गेस क्रोमियम डिप्लीट हो रहा है, ग्रेन बाउंड्री पर है। सर जो स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग है वो बेसिकली बाकी फॉर्म्स को ही पकड़ करके स्ट्रेस के साथ असिस्ट होके क्रैकिंग होता है, फेलियर होता है। हम्म इनफैक्ट उसका एक मोड आईजीसी भी है, अगर ग्रेन बाउंड्री वीक हो रहा है तो वहां से कर सकता है, फिर पिटिंग का जो नॉच बनता है वहां से भी हो सकता है। तो हम्म आईजीसी तो सर मेरे अनुसार इसमें फिट बैठेगा। आई गेस स्टील्स के केस में तो देखा आईजीसी है कि स्टेनलेस स्टील्स, the selective leaching of chromium and grain boundary can lead to, so stainless steel is an example of this, but mm, like aluminum and titanium में maybe वहाँ पे इंटरनल corrosion won't be a major factor. उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। नहीं सर, अभी रिप्लाई इधर इतना फ्रीक्वेंट आ नहीं रहा है जितना पहले आता था। फिर यार आई गेस डिस्कशन फॉर्म पे इवन मेरे को भी आइडिया नहीं लग रहा है।
सर जैसे हम लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो मतलब इट इज अप्रोप्रिएट टू राइट, मतलब जो डिस्कशन फोरम है उस पे क्या मार्क कर सकते हैं प्रोफेसर को मेल पे, या आपका क्या सर सजेशन रहेगा इसमें? कर दो आई गेस। हाँ, पूछ सकते हैं प्रोफेसर सर। आई गेस हेड बी फाइन इन द कोर्स। सर मेल आईडी शेयर कर देते हैं, जो मेल आईडी है सर। प्रोफेसर के मतलब सर का टाइप इट इन द चैट। वीएस राजा एट सर अभी लाइव सेशंस और होंगे प्रोफेसर सर के प्रोफेसर के साथ? साथ। जी सर। आई डोंट नो, होने तो चाहिए यार, अगर उन्होंने स्टार्टिंग में लिया है तो। अगेन आई एम नॉट श्योर कि, बिकॉज लास्ट कोर्स में ऐसा नहीं था, प्रोफेसर ने कभी नहीं लिए थे लाइव सेशन। इसमें इसमें ले सर रहे हैं जैसे तो क्या फ्रिक्वेंसी है? जैसे आपके साथ, जैसे ये जो जूम प्लेटफॉर्म है, इस पे क्या है कि हम भी अपनी बात रख सकते हैं, और जैसे कोई क्वेरी हाँ है तो हाँ। पूछ सकते हैं। जो यूट्यूब का होता है ना सर, उसमें कमेंट टाइप करने में ना सर बहुत टाइम लगता है। जैसे कुछ अगर, एक तो कुछ अगर दिमाग में है तो उसको फ्रेम करके डालने में ना सर, फिर वो चीजें निकल करके उतनी जल्दी आती नहीं है सर। तो अगर हाँ। सेशन रख रहे हैं तो अगर जूम पे रखेंगे तो सर ज्यादा इंटरेक्टिव हो पाएगा और हम लोग अपनी क्वेरी रेस कर पाएंगे। लास्ट टाइम लास्ट टाइम हुआ था यूट्यूब जूम पे ही लिंक हुआ थी था। सर, यूट्यूब पे यूट्यूब हुआ था, अच्छा लिंक थी ओके सर, ओके। तो उसमें टाइप करने में सर बहुत बहुत कठिनाई आती है इतनी जल्दी। एक तो फ्रेम ओके करके कुछ अच्छा, हाँ उन्होंने आप किया सर। सामने से वॉइस में नहीं बात कर सकते हैं या उसमें यूट्यूब पे? जी सर, हम वॉइस में नहीं तो हमको कमेंट टाइप करना पड़ता है सर। अच्छा अच्छा। ओके हाँ। आई गेट यार। मेरा आई सर अभी गेस। जो 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 क्वेरी है, एक तो पिछले असाइनमेंट में, असाइनमेंट नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 था, हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज, जनरेशन ओवर वोल्टेज का, एक तो वहां पे डाउट है। फिर इसमें जो का 3 है, तो मैं पहला सर से वाला जो, पूछ रहा इसमें जो फर्स्ट वाला है हूँ। पैसिव स्टेट का, एक तो है। फिर एक तो क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन में दिक्कत है, वो तो आप टेकअप करके उसको जो भी है वो तो मार्किंग है पर देख हाँ। लीजिएगा सर। और एक ये लास्ट वाला जो था कि इसमें इंटरग्रेनुलर कोरोजन क्यों ऑप्शन नहीं है। ये तीन चार हम्म। डाउट्स हैं सर, जो इनफैक्ट किसी और ने भी फोरम पे रेस किया है, यही सेम सेम मैं देख रहा था कल। हाँ, 9th क्वेश्चन पूछा है राजेश ने। 914, ये तीनों सेम ही रेस हाँ। किया है सर। हम्म। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वाला पार्ट तो है क्या नहीं? वर्डिंग वगैरह इंटरप्रिटेशन में हाँ। ठीक है, मैं इनको प्रोफेसर को मेल भेज के देखता हूँ। ठीक है सर, थैंक्स सर। और तो ठीक है। इसके कितना हो गया सेशन? सेशन तो आई गेस 1 घंटा, 1 घंटे से ऊपर हो गया, बट आई थिंक आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग लेट, सो वी नीड टू कंप्लीट एटलीस्ट 1 घंटा रिकॉर्डिंग। ठीक है सर, अभी सर जो असाइनमेंट नेक्स्ट है उसमें भी अगर इस तरह का कुछ है ऑप्शन जिसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं, उस पर एटलीस्ट कुछ एक हिंट दे दे, सो दैट हम लोग फाइव में इंटरप्रेट वैसे कर पाए। देखता हूँ, एक सेकेंड। फाइव। I'll just share.
तो स्टील इमर्स्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड एक्सिस्ट कोरोजन प्रोटेक्शन ये सो इसमें आई गेस you're given the applied potential. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। हाँ तो and you're given the solution potential. Just subtractly then see कि किस तरफ shift हो रहा है and you can say whether it's cathodic or anodic inhibitor. Conversion conversion coating. ये सेकंड वाला सर थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें, जो ऑप्शन सी है उस पे चाहिए सर। C पे provide adhesive strength for electrolytic deposition. Again इनमें solution में भी they don't clarify कौन सा क्यों कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है बस they'll give you this ये solution है बस provide adhesive strength for electrodeposited metal coating ये तो है yes adhesive strength for coating and increase corrosion protection उसके ऊपर इलेक्ट्रो को डिपोजिशन करते हैं क्या जो लेक्चर्स में सर मेरे को मिल रहा है उसमें सी ऑप्शन मेरे को नहीं लग रहा है इसमें, बट वही है कि थोड़ा सा ओपन एंडेड सा हो रहा है फिर ये भी। आई गेस लेक्चर के हिसाब से हो रहा है लेक्चर के हिसाब से हाँ ऐसे लास्ट ईयर नहीं था ये ऑप्शन हाँ मतलब आंसर नहीं था ये बस बस यही एक था सर जो सेकंड वाला, जो हाँ थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए थी, अदरवाइज तो बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर इसमें। हाँ जिंक फॉस्फेट ये हाँ ये क्लास में बताया था अलग पैटर्न में चलो अलग मेटल रिलेशन रेट आइकॉर आ जाएगा आइकॉर से टेफल इक्वेशन लगा के रिडक्शन पोटेंशियल आ गई इक्वल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल आ गई ये तो लास्ट वाला तो लास्ट वाला बताया ये ये केवल सेकंड वाले में ही था सर, बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है ठीक है इसमें तो। सर इसमें एक चीज मेरे को ये बताइए, जैसे जो एग्जाम होगा
कुछ असाइनमेंट के नंबर होते हैं, फिर एग्जाम होगा एंड में। हाँ एग्जाम हाँ। सब्जेक्टिव रहेगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे? एग्जाम। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर सर का एक कोर्स और था, कैथोडिक प्रोटेक्शन हम्म। इंजीनियरिंग, उसको करा था, तो वो सब्जेक्टिव था सर एग्जाम पूरा। ओके। इसमें लास्ट में एक सब्जेक्टिव असाइनमेंट है तो सही। अगर मैं ये इस पे दिखाते नहीं है ना, आई गेस। अपलोड नहीं करते इस। नहीं, इसमें नहीं करते सर, जो एंड में आता है ना जब वो, हाँ, पेपर जब। हाँ। हाँ, तब एक्सेल इन्होंने ऐसा शीट एक कुछ। अपलोड। ओके। हाँ, उसका मेरे को भी आइडिया नहीं है। मोस्टली अगर प्रोफेसर सेम पॉलिसी ही रखते हैं तो अगर उनका सब्जेक्टिव उसमें था तो इसमें भी सब्जेक्टिव ही होगा। मैंने पिछला कोर्स किया था, उसमें भी सब्जेक्टिव ही था। काफी चांसेस सब्जेक्टिव होगा। ओके। आई गेस 1 घंटा हो गया है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। ठीक है सर, थैंक्स सर।